नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्किटेक्ट राजेश बोरकर है। मैं भोपाल में पिछले 20 वर्षों से आर्किटेक्चर और अर्बन प्लानिंग के क्षेत्र में काम कर रहा हूं। वाल्मीकि संस्थान द्वारा चलाए जा रहे 5 दिवसीय इंटर्नशिप एवं ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत जीआईएस और रिमोट सेंसिंग का मैं छात्र हूं और पिछले 3 दिनों से लगातार इस कोर्स को अटेंड कर रहा हूं। वाल्मीकि संस्थान द्वारा ये जो कोर्स चलाया जा रहा है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम है। इस तरह का प्रोग्राम सभी लोगों को बहुत लाभ देता है और आने वाले दिनों में जो परिस्थितियां हमारे सामने आने वाली है उसमें इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम की बेहद आवश्यकता है। यहाँ पर इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में विषय विशेषज्ञों के द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है। वाल्मीकि संस्थान के जो विषय विशेषज्ञ हैं उनके अतिरिक्त वाल्मीकि संस्थान ने दूसरे राज्यों से भी विषय के विशेषज्ञों को इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल किया हुआ है और कोविड-19 जैसी महामारी की इस विकट परिस्थिति में भी इस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना अपने आप में एक बेहद ही अनूठा प्रयास है। इसके लिए मैं वाल्मीकि संस्थान, उसके आयोजक और उसके निदेशक को, सभी लोगों को, पूरे स्टाफ को प्रशंसा करता हूं उनकी और धन्यवाद देता हूं कि इस तरह का प्रोग्राम चलाया जाए और भविष्य में यदि ऑफलाइन प्रोग्राम कोई भी चलाया जाता है तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पर मैं जीआईएस और रिमोट सेंसिंग की कोर्स को ज्वाइन करूं और उसका पूरा लाभ यहाँ के विषय विशेषज्ञों के द्वारा लूं। और सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं, उन विद्यार्थियों को भी जिन्होंने इस तरह के प्रोग्राम को अटेंड किया और फ्यूचर में भी यदि कभी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम इस तरह का ऑर्गेनाइज किया जाता है तो उसको ज्वाइन करें और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। Good evening everyone. Respected Director Urmila Shukla Madam, Course Director Bhatte Sir, Course Coordinator Lard Sir and all the experts. Myself Parul Sharga and I am pursuing PhD Forestry from Forest Research Institute Dehradun. The training module on basics of GIS and remote sensing was excellently formulated. Right from the basics till its applications, all the experts, Daesh sir, Dr. Rubina madam, Sukan sir, Sharabdeep sir, clarified our doubts very well. During this pandemic, it was very nice to attend this session and it was in fruitful direction. I would like to express my deepest gratitude to each and everyone for making healthy interactive session. Thank you. Hello everyone, my name is Sumit Kumar, a final year student pursuing civil engineering from LNCT, Bhopal. Today I am very much thankful to you, that is MP Valmi, for providing such an informative and effective online training program during this difficult situation or difficult environment of pandemic. As per my interest, I opt my favorite subject, that is GIS, and I practically enjoy the virtual illustration which made the theoretical content much easier. So thanks to your institute, faculties and all those who involved in the execution of this training program, and also I feel glad to be a part of your institute. Thank you very much. Greetings to all. My name is Valentina Kapustanskaya and I am currently studying at Wilfrid Laurier University, which is in Ontario, Canada. I'm doing a BA in Geography with a minor in Geomatics and I am presently in my 3rd year. Through these 3 years, I have had the chance to work on various GIS softwares and platforms like QGIS and various others developed by Esri like ArcMap and ArcGIS. Recently, I got the opportunity to attend a 5-day course introduced by Valmi Bhopal on GIS and remote sensing. And talking about the course design and the course conduction, I feel that all the classes were designed in a manner which helped the participants understand the basic nature and the basic concept of GIS and remote sensing. All the experts took into consideration that all the participants did not have a geography background,
which really helped to conduct all the classes better, and we could understand all the concepts in a better manner. I also feel that this also helped the experts to maintain a steady flow of knowledge throughout their courses and throughout their classes, and it really helped me understand that there can be a lot of things about GIS that I would probably know now, but I never knew about them. So all of them were very new to me. I would also like to thank, especially for letting me have this opportunity, I would like to thank the course coordinator, Yogendra Lad sir. I would also like to thank the course director, Vivek Bhatt sir, and the director of Valmi, Urmila Shukla ma'am, without whom the course wouldn't have been possible and a huge success. I am really honored to have had the opportunity to understand and learn a lot of new things from you all. Thank you so much.